Good morning, students. I'm JP Pandey, PGT Accounts. I'm going to deal the partnership fundamental before you. Hence, the St. Xavier's School Salempur welcomes you on the online classes. Now, firstly, we will start chapter 1. Partnership fundamental. What is fundamental? Fundamental means the basic knowledge. Basic knowledge means if we are going to know or understand the term with the basic knowledge like that. If you are going to learn a computer, the guide make you understand that this is keyboard, this is monitor, this is CPU, this is card, and these are the keys and about their function. So that means before starting the courses, you should know the fundamental things, keyboard, CPU, and the monitors regarding the card. Such like that, partnership, it also has the fundamental terms. Before knowing the partnership term, we should have the knowledge what term is may occur or generally come into the partnership term when we are going to study all about. Like that, partner what is? Partnership, it is made up with the two words. First, partner, and second, the ship. Ship is prefix word. Hence, firstly we will deal the partner. What is partner? We will also just get it separated from in two helps. Partner. Partner means part plus ner. That means such a body that divide the profits in a fixed ratio. What does partner means? Partner means such that body that divide the profit in a fixed ratio. For an example, if we are going to do a business, at least every business has two functions, purchase and sales. That means one will be the purchaser, then second one will be seller. That means if these two terms is being happen when minimum two person is being required for this phenomenon. अगर हम कहीं कुछ खरीदने जाते हैं तो वहां शॉपकीपर्स और हम दो आदमी होते हैं. इसका मतलब है कि दैट मीन्स परचेजिंग और सेलिंग विल बी डन with the minimum number of person two. At least two person is being required to prosecute the phenomenon either sales or purchase. Now we can define it. The two bodies, they divide the profit in equal halves, equal or fixed ratio. In equal or fixed ratio. What is that? That means these two partners, they will divide their profit in a fixed ratio. After all of that, we are coming, these two partners are coming to the business with the two different background. Two different background means these two partners, suppose that is A and second one is B.
then A and B, they both are different with the mind situation. Neither A will believe on B, nor B will believe on A. In such condition, in such that A and B may combine to each other on the basis of two cases. First, when B is going to assign all the work and authority to A, जब B A को ही सब कुछ मान लेगा कि आप जो डिसीजन लेंगे वो डिसीजन सही होगा, हम आपके हर बातों से एग्रीड होंगे, ये पहला टर्म होगा। दूसरा, सेकेंड कंडीशन, व्हेन B is not agreed to give the authority or any type of decision particularly to A. In such a conditions, इस कंडीशंस में A और B दोनों बिजनेस में बैठेंगे, A भी बैठेगा और B भी बैठेगा। पहले कंडीशन में सिर्फ A बैठेगा। क्यों बैठेगा? क्योंकि B को A के ऊपर विश्वास है। He is having belief on A, so he will leave all that business matter to the A. Whatever A will do, that will be the correct. But the second one, I am just letting it that A and B, whose mind are not set up, are not equal. On such a condition, A will also sit in the business, B will also sit in the business. Like that, now we can make the definition. Partnership under Section 4, Section 4, Act 1932. It is being defined as partner when two or more persons combine to each other to do a business. When two or more persons combine to each other to do a business, they divide the profit in a fixed ratio. Either one of the partner see the whole business or both of them see the business accordingly. This is the definition of the partnership. This is known as partner. This is known as partner. Now we are coming, partnership is what? We are knowing here partner. Again, just you hear, when two or more persons combine to each other to do a business, they divide the profit in a fixed ratio. Either one of the partners see the business or both of them see the business. That is known as partner. Now we are going to do what is this is partner, then what is partnership? Partnership means if there is two friends and their relation in between is known as friendship. If there are two persons, they are relative, their relation is being known as relationship. Just like when two or more partners are having each other, then their relations is being known as partnership. That is known as partnership. Hence, it is clear. Now we will just proceed the term in further. Partnership may be done on two bases. First, let partnership is being done on the two way. First, on deed, and second, without deed. What is on deed? What is without deed?
Let you understand first. On deed means if you are going to the school to do a class for 1 day or 2 day, but your name is not registered to that school, that means you are without deed. If any claim or any happen is being happened on you, no any action will be tolerated by the school. On such a condition, you have been said to be the non-generated. Yeah, you are the student without deed, without allotment. On deed, what is this? We are going to deal first of all on deed. On deed means if two partners is being combined to each other on the deed basis, let me know what is deed first. Deed is what? Deed means a belief. Deed means a agreement. An agreement. Now you can understand by this, deed refer to belief between the partners or an agreement between the partners. For what it is? If any partner, I just you explained before, if there are two partners, A and B, they are not mentally same. They are not mentally behave to each other unequally. So, on that conditions, the belief or the agreement that will be needed. Then we have a piece of paper on which we just prepare and details of the business. Details of the business means hence the symbol of rupees are being made. This is known as non-judicious paper. This is known as non-judicious paper. अल्टरनेट में इसको बॉन्ड कहा जाता है. जैसे आप जाते हैं, नोटेरी कहा जाता है. एक कागज होता है, इतना दूर इस पर पैसा बना होता है, इस बाकी चीज इस पर व्हाइट रहती है और लिखने के लिए होती है. देन every term and conditions will be written on the non-judicious paper so that there will be no disputes in further in between the partner. Suppose आज अगर जो भी चीज हम लिखित में ले लेंगे तो आने वाले समय में किसी भी पार्टनर का किसी भी पार्टनर से डिस्प्यूट्स नहीं होगा. रीजन क्या है? अगर एक पार्टनर if he is claiming that salary was being written 800 and suppose the salary was written 500, then you may have the claim कि देखिए यहाँ पर सैलरी 500 लिखी हुई है. On such a condition, your claim will automatically revoked. So it is belief or an agreement. It is also known as the articles of association also. So let me deal these all terms, whatever we deal, that will deal on the paper. First, name of the business. The first term, name of business. Name of business, whatever the name you will keep, one time the name you may keep that. एक ही बार अपने बिजनेस का नाम आप रख सकते हैं, बार बार बदल नहीं सकते. कुछ भी नाम ले लीजिए, XY Limited. That means this is the name of your business. Now it can be fixed. It cannot be changed at all at any moment. नेम ऑफ द बिजनेस के बाद होता है सेकेंड वन, द एड्रेस. एड्रेस, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द बिजनेस? व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द बिजनेस? द बिजनेस एड्रेस you will mention here.
After that, name of the partner. Name of partner. Who is going to be your partner? You should have mentioned here. Suppose there are three partners, then you will have to write here first A, second B, and third C. There are three partners, hence it is clear. Now the rule is here. No partner can go outside the business or leave the business without consent of the other partners. Again, no any partner can leave the business without consent of whole partners. If any one of them will have the objection, you should have returned to the same place. Nextly, second, no partner can admit the favorite man or favorite friend as a form of partner without consent of other partners. Suppose C is getting a person whose name is F. C wants that F will come into the business to become a partner. C is agreed, B is agreed, but A is not agreed. That means F cannot be the partner. इसका मतलब है कि अगर बिजनेस से बाहर जाना है आपको छोड़ के, तो भी सारे पार्टनर की वोटिंग जरूरी होगी। अगर आपको कोई नया पार्टनर लाना है तो भी आपको सारे पार्टनर का कंसेंट जरूरी है, सहमति जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। यहां नेम ऑफ पार्टनर के बाद होता है पार्टनर इज गेटिंग सम फैसिलिटीज लाइक दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। What is interest on capital? Interest on capital means a partner draws interest at the last of the year on his capital. Means, be careful. Suppose it is I and this is business. I am taking interest on my capital. That means interest will come to me. That means it is beneficial for me. It is an income for me. But for business, it would be the expenses. Like that, we are going to take interest on capital. If the partner is being allowed, then you should have to write the percentage of the interest on capital. Suppose अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है तो कितना परसेंट पार्टनर लेगा ये लिखना पड़ेगा आपको। मान लीजिए आपने लिख देता है, आप लिख देते हैं 8% पर एनम, तो ये हो गया। अगर पार्टनर डिसीजन लेते हैं कि कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लेगा, तो इन सच कंडीशन ऐसा मार्क बनाना पड़ेगा कि नोबडी विल टेक दैट। ठीक है। अब यहां पर एक रूल सुन लेंगे। इफ फर्म इज इन लॉस, नो पार्टनर कैन गेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान देंगे अच्छी तरीके से। पहला रूल, अगर फर्म लॉस में है तो कोई भी पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पाता है। दूसरा रूल ध्यान से देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज बीइंग either all partner will get, otherwise no partner will get। फिर से ध्यान से सुनेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या तो सारे पार्टनर पाएंगे या तो कोई नहीं पाएगा। फिर से सुन लीजिए, अगर फर्म लॉस में है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। सेकेंड केस, अगर फर्स्ट केस एंड नाउ द सेकेंड केस, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या तो सारे पार्टनर को मिलेगा और नहीं तो किसी को नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद हम आते हैं सैलरी।
सैलरी इज द इंडिविजुअल थिंग। ए बी सी तीन पार्टनर हैं, इसमें से कोई भी पार्टनर सैलरी ले सकता है और कोई नहीं भी ले सकता है, ऐसा डिसीजन हो सकता है। इसमें से मान लीजिए बी को कहा गया कि आप सैलरी लेंगे, तो कोई जरूरी नहीं है कि ए भी सैलरी लेगा और सी भी सैलरी लेगा। सो लेट हियर, अगर आपने बी को सैलरी दिया है तो यहां लिखना पड़ेगा बी सैलरी। कितना दिया है आपने? 1,000 रुपया पर मंथ दिया है या क्या दिया है? 12,000 पर एनम लिख लीजिए या 1,000 पर मंथ लिख लीजिए। अगर आप 500 देते हैं तो 500 पर मंथ लिख लीजिए या 6,000 पर एनम लिख लीजिए, दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं। सैलरी के बाद तीसरा कंडीशन आता है कमीशन। Just to imagine a partner, suppose there is three partners, we are supposing first A, B and C. That means A, B and C. The one partner will act as a partner as well as an agent. यही पार्टनर एजेंट भी कहलाते हैं। इन लोगों में आपस में डिसीजन हो जाता है कि इसमें से जो भी पार्टनर नया पार्टी खोज के लाएगा, ध्यान दीजिएगा, आपसे गुड्स सारे पार्टीज खरीद रहे हैं, लेकिन जो पार्टीज बाहर से कोई पार्टनर लेके आता है, उसके जान पहचान के थ्रू आता है, तो पूरे साल में जितना खरीदेगा वो गुड्स, उस गुड्स का कुछ परसेंट उस पार्टनर को कमीशन के रूप में मिलता है। यहां ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए बी नया पार्टी इंट्रोड्यूस करता है, तो ऐसे में बी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जितना गुड्स खरीदेगा उसका कुछ परसेंट, मान लेते हैं 2% अगर आप अलाउ करते हैं, तो पूरे साल का जितना गुड्स वो खरीदेगा और उसमें से जितना पैसा रिसीव्ड हो जाएगा, उस रिसीव्ड अमाउंट पर 2% कमीशन आपको मिलेगा। देन कमीशन इज ऑफ 2 टाइप। कमीशन यहां 2 तरह का होता है। फर्स्ट बिफोर एंड सेकेंड इज आफ्टर। व्हाट इज बिफोर? बिफोर मीन्स if in question it is written that, मान लीजिए कौन कमीशन लेता है? बी लेता है, तो बी का अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो बी इज गेटिंग कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, अगर ये वर्ड लिखा हो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, अगर ये वर्ड लिखा हो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ऑन दैट कंडीशन, फिर से ध्यान देंगे, अगर लिखा हो कि बी कमीशन लेगा 2%, तो 2% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो ऐसे कंडीशन में प्रॉफिट इनटू 2/100 हो जाएगा। क्लियर हुआ? जितनी प्रॉफिट होगी उसका 2% हम निकाल देंगे। क्लियर हुआ हमारी बात? नेक्स्टली वी आर कमिंग, अब ये सेकेंड आता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मान लीजिए बी इज हैविंग 2% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या हो गया? बी कमीशन लेगा लेकिन आफ्टर लेगा। आफ्टर का मतलब क्या हो गया? प्रॉफिट इनटू 2/100 + 2। इसका मतलब है कि जितनी प्रॉफिट होगा उसका 2/102 लेगा कमीशन बी। बी को 2% मिलेगा 102 रुपए में। 102 में कितना मिलेगा? 2% मिलेगा। क्लियर हुआ? नेक्स्टली वी आर कमिंग रिजर्व।
what is reserve? Okay, the next term is reserve. What is reserve? Suppose you are having the monthly expenses as a pocket expenses, then you get it reserved in a box. Suppose that you are collecting money at a place, the time will come and money will become bigger fees. Then on that times you apply the same money to purchase a jeans or shirt or whatever it is. Like that firm what do? Firm also do the same condition. Every year from profit, every year from profit सम परसेंटेज, कुछ परसेंट प्रॉफिट का रिजर्व में ट्रांसफर कर देता है। प्रॉफिट का कुछ परसेंट रिजर्व में ट्रांसफर कर देता है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दिस इज नोन एज अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। दिस इज नोन एज अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। What does it show? It shows that if a partner is going to die, अगर एक पार्टनर मर रहा है तो वो मर जाएगा, लेकिन ये प्रॉफिट, ये रिजर्व में से पैसे वहां से नहीं निकलेंगे। ये रिजर्व का पैसा तभी निकलेगा when firm is in crisis। अगर हमारी फर्म क्राइसिस में है या परेशानी में है तो ऑन सच कंडीशंस हम कहीं बाजार से पैसा मांगने के बजाय रिजर्व में से पैसा निकालेंगे और फर्म में लगा देंगे। इसका मतलब क्या है कि रिजर्व इज ओनली ऑफ फॉर द फर्म, नॉट फॉर द पार्टनर्स। ओके स्टूडेंट्स, these are the terms. The next things we will just deal in the next day. Hence, I am JP Pandey again, welcomes you from the St. James School, Salempur. I hope you will be quite fine, and we will deal the video tomorrow again, the later on. Okay, thanks.